channel Tranquil Living Gist. I hope you all are safe and sound. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. So this makeover is going to be a cafe makeover. So without wasting any time, let me introduce you to the people who run this cafe. Hey, I'm Utsav Taneja. I love cooking and I'm quite passionate about it too. So that's why I opened up this cafe and let's see how it goes. So we are reopening this cafe and it's going to be a brand new place. So welcome to Cautry Cafe. Hello everyone, how are you doing? I hope you all are good. So I'm here with another makeover and I'm super excited about this one because I really love this place. So I'm standing in the supermarket of our area where we live in, and past few months when it was lockdown, it was really helpful because we had things within our reach and we were not roaming around for deliveries and everything. So it was very helpful. But what happened is they had a restaurant upstairs which was functional prior to lockdown, but since lockdown happened they closed it. And now since things are going to open, hopefully things will be back to normal soon. They're planning to open it with a new design. So they saw some videos of mine and they approached me if I could help them, and I'm really grateful to them that they thought of me. So this is like that Nukkad ki dukaan for my daughter and I really like this place. So I'm going to turn it around and I hope you'll also like it. So let me walk you through the site, and thankfully they are closed for 2 days, so we'll not have anybody coming in. So that way we are safe here and it's all closed. So let me walk you through the site without wasting any time. So one of the main requirement was these ceramic pots. They sell those, so they wanted a place for them to sit on. Also they wanted the place to be a bit more alive. So what I did is I ripped off all these carpet mats which you see on the wall, also for the focal wall, and I decided to use lots of color, for which my inspiration was the Holi festival which we had in our layouts. So let's have a look at the inspiration now. मेरे मत लगाना। बेटा बस। हाँ ऑन है। हैप्पी होली। अरे मेरे मुंह। और हम पहुंचे होली की खोज में हरीश ट्रेडर्स। कोरोना का टाइम था और धर्मपत्नी जी रंगों के चुनाव में ही लगी रही और दुकान हो गई बंद। और मुकेश भाई ने एक बार फिर सुन ली राजस्थानियों की पुकार और हम पहुंच गए अंदर। मेरा नाम मुकेश है, गेमिंग में IND ब्लास्टर ओपी मेरा नाम है। हमारा यूट्यूब चैनल है अपना, उसके नाम IND गेम्स है, स्पोर्ट्स नाम है, जो अपने हम लोग PUBG लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। आपको ही बता दूं, ये है राकेश, ये कैशियर नहीं इंजीनियर है। ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान है, इसका पॉज कर लेता हूँ। आमिर खान है, और आप भी बता दो, थोड़ा नकाब बता। सलमान खान है। ये है हरीश। ओके, इन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करना। All done now.
वेलकम। सो यहाँ ये रेस्टोरेंट में आपने देख ही लिया है, यहाँ पे बहुत बड़ी विंडोज़ हैं दो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि मैं बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर लाने वाली हूँ और प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, तो ये विंडोज़ बहुत काम आने वाली हैं। प्लस दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट, जो किसी भी एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमिंग टू दिस वॉल, क्योंकि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को पोर्शंस में ही कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है हमारे लिए, सिंस सारा काम हम दो ही मिलके करते हैं तो वी हैव टू मैनेज टाइम। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक ओवर इज दिस वॉल। सो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये डिज़ाइन प्रपोज किया था जिसमें कि बहुत सारे कलर्स इन्वॉल्व थे। तो हमने फ्राइडे रात को ही आके सैंडिंग, क्लीनिंग प्लस प्राइमर कोट अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा रेडी रखा ताकि सैटरडे मॉर्निंग से हम लोग अपना मेन काम स्टार्ट कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम फॉर पुट्टी। तो इस वॉल पे भी हम एक पैटर्न बनाने वाले हैं। तो व्हाट वी विल डू, विल टेक दिस मास्किंग टेप, पूरा कॉर्नर्स में देंगे, प्लस जो मैं एक अपनी वर्टिकल लाइंस का पैटर्न देने वाली हूँ वो भी इसी से आएगा। इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी लाइन स्ट्रेट है, आप टिल्टेड नहीं जा रहे हैं, गैप आपका सेम है, बट दैट इज ओनली टाइम यू विल इन्वेस्ट, बिकॉज उसके बाद प्रोसेस इज सीमलेस, यू जस्ट हैव टू पुट पेंट ओवर इट। और उसके बाद जब आपका पेंट पूरा प्रॉपरली ड्राइड हो, गीले पेंट के ऊपर बिल्कुल भी मास्किंग टेप ना लगाएं, अदरवाइज कलर ब्लीड हो सकता है। तो प्रॉपरली इसको स्टिक करें और कलर प्रॉपर ड्राई होने के बाद पील ऑफ करें, एंड आपका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत और नीट दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो पैटर्न के लिए कुछ नो हाउ टू मेक श्योर कि आपका पैटर्न नीट एंड क्लीन दिखे। मास्किंग टेप मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पेंसिल या फिर कुछ भी मार्किंग के लिए, मे बी अ चॉक और पेन, कलर पेंसिल, एनीथिंग विच यू हैव। तीसरा, दिस इज़ अ ड्रिल बिट, बट व्हाट आई मीन इज आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो आपका मेजरिंग टेप या कोई स्केल या फिर कुछ भी, स्पून, स्केल, एनी ऑब्जेक्ट। तो मुझे अपनी टेप के बीच में जो पैटर्न है, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है उसके लिए। मेजरिंग के लिए अगर मैं हर एक सेक्शन में मेजरिंग टेप से करूँ तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए ये थोड़ा टाइम सेविंग रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर ऑब्जेक्ट, इन योर केस इट कैन बी एनीथिंग, मार्क इट हेयर, सेम थिंग अगेन, कम हेयर, मार्केट हेयर। यहाँ पे मुझे मेजरिंग टेप में मेजर करने का टाइम बहुत सेव होता है, तो आई हैव 2 end points here. Now all I need is use the tape. और मेजरिंग टेप लगाते वक्त कभी भी सेंटर में से नहीं पेस्ट करें, कॉर्नर प्रेस करें, दूसरा कॉर्नर प्रेस करें, सो दैट आपका लेवल बिल्कुल करेक्ट है। वंस यू हैव इट देन यू प्रेस इट। गुड एक्चुअली, सिमेट्री इज देयर। उसी में एक्चुअली टाइम लगता है कि आपके पोर्शंस डिसप्रोपोर्शनेट ना दिखें, तो उसमें हमें बहुत टाइम लगा। सो 3.5 घंटे अगर आप करना चाहें तो बी रेडी, 3.5 घंटा इज व्हाट इट टेक्स। So here it is, Asian Paints Royale 9714, and it's a lovely shade. See how pretty it is. Shining now. So the paint is ready and I have taken it in the brush. Let's start painting now. Finally, the base coat
of blue is done. We gave it a very light coat because we have to put multiple colors on top of it. So we wanted to make sure that the white of the wall just shows up a little bit. We didn't want it to clearly, be dark blue in shade. No, we just wanted to give it a little diluted shade. So we added a little more of water for this coat. We'll let it dry for some more hours. We'll come back to that later. In the meantime, we'll cover this area. So this area we have to cover grey because people sit here and they get foot marks here. So we will put grey color here. Once done, then on top of that I'll try to give it brick structure sort of thing. So yeah, let's get started with the grey shade now. So this is the grey shade which we are going to use. It's K117 for this area. I took the same brush which I used on the focal wall and I give shades of Vegeta Surf on this area as well. So we are done with painting both the walls. It's almost 9 p.m. and we hardly have any stamina left. So we are thinking to just wrap it up for today. The last thing which we are planning to do is this wooden wall. We are going to give it a quick coat of primer so that in the morning when we arrive, the primer will be all dried up and it will be ready to be painted. So that's the only basic thing which we are going to do now, and we'll call it a day. So it is almost midnight. It's actually 11 o'clock and we are done for today finally. Both the walls are done. Primer for this wooden area is done. So my wood is all ready. Tomorrow we just have to come and give it a good grey shade. And here I'll be putting lots of colors. It will be like a holy festival on this wall. So yeah, lots of work to do tomorrow, but done for the day. We'll just hit the bed now. Thank you. Hi, morning. So this is day 2. Today we'll do the final touch-ups of the colorful wall, and yeah, without wasting any time, let's get started now. Okay, so please bear with me because it's just me today, so I have to paint as well as shoot. So let me just show you what is the next color which I'm going to open up. It's called Pink Candy from Asian Paints Royale and the code is 8063. Let me just open it and show you how pretty it looks. Look at the shade. I just love it. For the shading part, I use this honeycomb brush as shown on the screen. Okay, so I am done with this pink shade. See, this is what I have done. I have given strokes of pink at the different places. So this is just one shade done. Now we have another few shades to do. Also coming to this area, see what my plan is. Whatever colors I'm using on the left wall, same colors bricks I'll be creating here. So in order to make sure that how your bricks are in a correct order, see, I have pasted, if you see, there are strings I have attached in that corner and that corner. So I just took a string, took a masking tape on the two corners, and with the help of leveler I marked, so that when I'm doing the with the foam I'm putting in the bricks pattern, they remain in the straight line. So that is what I have done. So that is a good trick. There are instruments like laser instruments which you can put and it will throw a laser beam on the wall, which makes your work very easier. I don't have it, so this is what I'm doing. You can also do the same. Just make sure that your wire is straight and you are using a leveler and you should be good to go. It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further, away from the fray? Let's not get stuck in our worries, we'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air, look up to the moon. I'll meet you outside, away from the crowd.
ready for the final reveal? In 3, 2, 1. Psych, 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 psych. Hello. So this is the wall which we showed in this video. I hope you would have liked the entire process. We tried to keep it as simple as possible. Do give it a try. It will look amazing for sure. And yes, if you like our work, please don't hesitate to hit the like button and subscribe to our channel. And please don't forget to hit the bell icon because we have plenty more videos lined up where we'll cover the entire cafe on a budget. Stay tuned. तो मेरे पास ड्रोन है, कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ. थोड़ा अजीब पोजीशन हो गई लेकिन So we have reopened the cafe. It is going to be a brand new place. So finally, welcome to the cafe. ये तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो. भाई मॉडल कहाँ रह गया अंदर? बोलो. Welcome back to my channel Tranquil Living J.